Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching and reacting to a Career 24/7 video. So please, please, please go and watch the video. The link to the video will be in the description down below. But the video today, how many times can I say video? That's what the video is about today. No, the video today is the huge victory India had over China, apparently. China could not block India at BRICS. I'm unaware of what exactly is going on here. In this video, PD Sir explains how China failed to block India at the BRICS platform, marking a major diplomatic win for India. Discover the behind-the-scenes developments and what this means for India's global standing. This update reveals the growing influence of India in the global forums, and I will agree. India is a growing powerhouse, that is to be said, that is for sure. So we will go ahead and give this a quick little watch. PD10 for maximum discount, ladies and gentlemen, and let's get right into it, yeah? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत की एक बड़ी जीत हुई है It was held in Brazil? ब्राजील Was it के held in ब्रिक्स समिट Brazil? में। चाइना It was held in Brazil. Oh, interesting. ब्लॉक नहीं कर पाया इस बार पहलगाम आतंकवाद हमले का मेंशन। I completely missed this, by the way. I've been off of social media for the past I don't know, few days. It's been very, very, very refreshing. It's been very refreshing. But yeah, I've been off of social media for the past few days. So a lot of this news stuff is new to me, literally. मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कहीं ना कहीं भारत All right, so BRICS condemns Pahalgam terror attack in strongest terms as Prime Minister Modi calls for sanctions against terrorists. That's fantastic. I'm so glad. I'm so glad that BRICS as a whole condemned the attacks. They should just condemn Pakistan. Well, don't just stop at sanctioning terrorists and condemning the terror attack. Condemn Pakistan and sanction Pakistan as well. तिब्बत को लेकर स्टांस है और साथ ही साथ जो रीसेंट क्वाड मीटिंग Free Tibet, free Hong Kong, Taiwan is the true China. हुई थी, उसमें जिस तरीके से ओपनली पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन किया गया, उसको लेकर चाइना ने एक कदम पीछे लिया है। और इस बार के ब्रिक्स समिट में पहलगाम हमले, एक्चुअली मैं कहूंगा पहलगाम मैसेकर का मेंशन प्रॉपर्ली किया गया है, इसकी निंदा भी हुई है। नाउ ये जो इशू है ना, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब एससीओ की मीटिंग हुई। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल ग्रुप है, इसकी मीटिंग होती है। I was aware of this as well. I didn't watch a bunch of videos on it, but I am aware of this as well. चाइना में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जाते हैं चाइना में, और फाइनल स्टेटमेंट में पाकिस्तान चाइना की वजह से पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन नहीं होता। भारत इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर देता है। इंटरनेशनल न्यूज बनती है। उसके बाद यूएस में होती है क्वाड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, वहां पर पहलगाम हमले का मेंशन किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में भी प्रॉपर्ली पहलगाम हमले का मेंशन किया गया। अब आप में से अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि खुल के ये क्यों नहीं बोला कि यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में कि पाकिस्तान ने ये हमला Yeah, that's crazy. The one that's, led by China doesn't condemn it, but the two other, the Quad and the BRICS, they do condemn it. Weird, interesting. करवाया है वगैरह। अब देखिए, पाकिस्तानी आतंकवादी इन्वॉल्व थे यहाँ पर। गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर एस्टैब्लिश कर पाना ना, और ब्रिक्स समिट में ओवरऑल रिटर्न फॉर्म में लिख पाना, ये ट्रिकी होता है। इवेंचुअली हम करेंगे। आप देखोगे अगर एक टाइम पर 26/11 हमला जो हुआ था भारत में, उसके बारे में बात करते वक्त कई देश पाकिस्तान का मेंशन नहीं करते थे, मगर एक टाइम पे आकर धीरे धीरे यूएसए ने भी काफी बार 26/11 हमले का जब मेंशन किया, तब साथ में पाकिस्तान का भी मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली इट विल हैपन। अभी के लिए तो मैं आप Because it's from Pakistan. पे साफ साफ बोल दूं, ब्रिक्स समिट और जो क्वाड की मीटिंग हुई है, दोनों उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। दोनों में जो ये निष्कर्ष निकल के आया है ना, उससे एक बात साफ हो जाती है, एससीओ का आज के समय जो महत्व है बहुत कम हो चुका है। सिंस पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करेगा, एससीओ हमेशा एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला ग्रुप बन के रह जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि अच्छा, इस बार का जो ब्रिक्स का समिट है ये होस्ट कर रहा है ब्राजील, मगर जो फोटो सामने आई है वहां पर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग कहां पे हैं? देखिए, इस बार का जो समिट है ये पुतिन और शी जिनपिंग अटेंड नहीं कर रहे। बाकी ऑब्वियसली जो कंट्रीज की पार्टिसिपेशन है वो तो यहाँ पर बिल्कुल है। चाइना और रशिया को रिप्रेजेंट किया गया है इन दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स द्वारा। रशिया के लावरोव यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी पीएम मोदी ब्राजील में कैसे पहुंच गए, तो आज के समय मोदी जी 5 कंट्रीज के टूर पे हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं इन द पास्ट। सबसे पहले ये गए थे घाना में, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, अब ब्राजील गए हैं ये, और फाइनली I knew he stopped in at Argentina. ये जाएंगे नामीबिया में। नामीबिया So he went to Trinidad, Ghana, Namibia,
Brazil, Argentina. Interesting. Very interesting. का मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वगैरह कुछ ना कुछ मैं अपलोड करूं, क्योंकि What is this map? What, what an interesting way to depict this map here with the Atlantic Ocean in such a stark contrast to everything else. बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है नामीबिया। 11% ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई नामीबिया से Yeah, Namibia is interesting. Namibia is a very, very interesting little place. Like inhabitants wise, it's like it's so tiny. There's like almost nobody there, and it's like just a giant, complete barren desert as well, with like tiny pockets of population of cities. It's a very beautiful place. I will admit, it's like geographically very stunning and beautiful. I mean, I guess that kind of happens when you go out into the middle of nature and there's nobody there. It does tend to be very stunning and beautiful. से ही आती है। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। इस विजिट को भी मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा, बट अभी के लिए हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। एक बड़ी जीत यहां पर भारत की ये हुई है कि पालगाम आतंकवादी हमले का मेंशन किया गया, बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप देखिए इस ब्रिक्स समिट को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। Did he? ट्रंप ने सीधा सीधा यहां पर यह बोल दिया। What? What is this? What is this? What is this? Trump says alignment with BRICS anti-American policies to invite additional 10% tariffs. Yeah, I mean he is tariff hungry. कि कोई भी देश अगर अलाइनमेंट He just did another huge round of tariffs against a bunch of different countries. Like he gave I think it was like a Bangladesh. Don't quote me on this. I know Bangladesh got like a 35% tariff, but a bunch of other countries got tariffs as well. करता है अपनी ब्रिक्स के साथ, और स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स इनके हिसाब से एंटी अमेरिकन है। नाउ अगेन अभी तक ब्रिक्स ने कोई एंटी अमेरिकन स्टेप चला नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पर कुछ कंट्रीज हैं जो डॉलर को त्याग देने की बात करती हैं। फॉर एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन इसके बारे में बात कर चुके हैं अभी रिसेंटली। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुला डी सिल्वा, Why उन्होंने ये would बात why यहां पर would कही। Putin want to get rid of? That's the one thing I don't understand about like the BRICS currency was why would Vladimir Putin get rid of the Russian ruble? Vladimir Putin is literally the richest man in the world, and if there was an upset in turn with, well, I mean, maybe that'll make him richer if he was able to convert all of his money to the BRICS dollar. कही है कि दुनिया को डॉलर के बियॉन्ड देखना होगा, Lula. बट आप ब्रिक्स को एंटी Well, अमेरिकन it's also Lula and Donald Trump have been going at it lately, especially with Lula. Lula's political party and the judges targeting Bolsonaro, the previous head of Brazil, for insurrection. But Donald Trump has been very angry at Lula for that. कह नहीं सकते, मगर ट्रंप ने यह कह दिया है कोई भी देश ब्रिक्स जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहा है, ब्रिक्स का साथ देगा तो एडिशनल 10% टैरिफ मैं लगाऊंगा। नाउ फनी बात मुझको यहां पर ये लगती है, अगेन मैं इसलिए बोलता हूं ट्रंप की धमकियां ये वो वगैरह ना सिर्फ अमेरिकन, पूरी दुनिया यहां पर बोल रही है कि इतनी खोखली लगती है। कुछ महीने पहले कुछ और बात कह रहे थे। ये जरा आप देख पाओगे, ये ट्रंप की ट्वीट है कुछ महीने पुरानी है। This is a few months ago, huh? The idea that BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a यहाँ पर new लिखा BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariff. And should we expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy? They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the U.S. dollar in international trade, or any country that tries should wave goodbye to America. I say it all the time, and I'll say it again right now. You really, really, really shouldn't read any. You shouldn't read any credency to what Donald Trump says a lot of the times, because a lot of the times it's just like narcissistic ramblings and him trying to force the narrative to be more positive in his perspective. Now, does that make him wrong? Not all the time. Sometimes it does. But again, I think people read too much into Donald Trump and what he says. And you got to remember, yeah, sure, he's the president of the US, but the president is just the figurehead of the political party currently in rule over the US. It's just one tiny position in a whole sea of government that is substantially more powerful than the president itself. I mean, we have judges that can stop and
deter him from anything he wants to do, which a lot of them have done. That's a whole other topic, I guess. रखा है कि जो आइडिया है कि ब्रिक्स कंट्रीज अब डॉलर से हटना चाहती हैं, ब्रिक्स करेंसी बनाना चाहती हैं, तो मैं ये सब होने नहीं दूंगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों को लिखित रूप में मुझे आश्वासन देना होगा कि ये कभी भी डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये कुछ महीने पहले की ट्वीट है। ट्रंप का जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहां पे आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर 100% से गिर के अब पहुंच गए हैं 10% पर। इसलिए मैं मैंने कभी भी ना इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखी एक बड़े लीडर की स्टेटमेंट में। अगर Well, it's because it's not anything actually set in, it's not any like actual, it's nothing written down. It's just him talking. Like it's not a law. It's not anything that's going to be codified. It's literally just him talking. So he can say whatever he wants. मान लो धमकी देनी थी, क्योंकि घूम फिर के धमकी है, ये ना 10% लगना है ना 100% लगना है। लगेगा भी तो आपको पता है कुछ महीने तक होगा, फिर काफी हद तक यू टर्न ये ले लेंगे। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा ट्रंप को एक यूनिफॉर्मिटी तो रखनी चाहिए कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी देनी है तो टैरिफ का जो यहाँ पे थ्रेट है ये यूनिफॉर्म रहे। तो अगेन ट्रंप के थ्रेट को लेकर किसी ने कुछ सीरियसनेस दिखाई नहीं। उल्टा ब्रिक्स कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की निंदा करी है जॉइंट स्टेटमेंट में, और भारत ने भी, ना सिर्फ भारत, ऑब्वियसली इंडिया, चाइना, रशिया तीनों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की निंदा करी है। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, ब्रिक्स लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स और यूनिलैटरल सैंक्शंस की निंदा करी है। और अगेन देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा ये भी शेयर करना चाहता हूँ, एज ए पर्सन हु कवर्स जियोपॉलिटिक्स, मेरे लिए ना ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्योंकि यूजुअली जब यूएस प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं ना तो कुछ वजन होता है उसके पीछे। एक आप मान के चलते हो कि दिस विल बी द I wouldn't say there's any weight as someone that vaguely follows geopolitics and has been an American citizen for a very long time. I'm an old man. I would say what the president says and does really doesn't have any weight whatsoever. It's his political party that actually has the weight. पॉलिसी, मगर इतने फ्लिप फ्लॉप्स हो रहे हैं यहाँ पर कि सब कुछ मजाक बन के रह गया है। एंड इट्स रियली सैड टू सी। और आप अगर जो ब्रिक्स लीडर्स हैं इनकी स्टेटमेंट देखोगे तो I mean, he can feel that way. That's fine, but I mean, the truth of the matter is Donald Trump is just one man in one position. ओपनली यहाँ पे जो टैरिफ्स का मिसयूज किया जा रहा है यूएस द्वारा, इसकी निंदा करी गई है। ये भी मेंशन किया गया है कि स्टारवेशन, भुखमरी को एक वॉरफेयर का टैक्टिक यूज किया जा रहा है, हम इसके अगेंस्ट है। ये ऑब्वियसली जो गाजा में सिचुएशन है उसके बारे में बात की जा रही है। ये गाजा के साथ जो हो रहा है, प्राइमरली जो इजराइल की वहां पर डिफेंस फोर्स कर रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। और फाइनली जो एयर स्ट्राइक्स करी गई थी ईरान पर, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। अब एक बार I सोच, thought this was a video on India and BRICS. I mean, I guess dunking on the USA is the BRICS way. कर देखना, पाकिस्तान पे हमने खूब सारी स्ट्राइक्स करी। इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि वो स्ट्राइक्स लेजिटिमेट थी, करनी चाहिए थी, इसलिए वहां पर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं मिलेगा। ये भारत की एक और बड़ी जीत है कि किसी भी समिट में आप देख लीजिए जो हमने Yeah, I mean, so let me read this here. From condemning unilateral sanctions to slamming tariffs, condemning the use of starvation as a method of warfare, as well as calling the airstrike on Iran as a violation of international law, the BRICS leaders' statement, which India is part of, has taken aim at the number of ongoing challenges. Subsequently, U.S. Donald Trump did the 10% thing. We condemn the imposition of unilateral coercive measures that are contrary to international law and reiterate that such measures, inter alia, in the form of unilateral economic sanctions and secondary sanctions, have far-reaching negative implications for the human rights, including the rights to development, health, food, and security, and general population of the targeted states, disproportionately affecting the poor and the people in vulnerable situations, deepening the digital divide, and exuberating environmental challenges, the BRICS leaders' statement said, in a clear reference to the sanctions against Russia imposed by Western nations. पाकिस्तान के एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए हैं, उसकी कहीं भी निंदा नहीं करी गई। और इस बार के समिट में आप ये भी देखोगे कि ब्रिक्स देशों ने ये भी ओपनली कहा है कि डब्ल्यूटीओ की जो इंपॉर्टेंस है, BRICS leaders condemned Gaza and Iran attacks, urge global reforms. बिल्कुल हट गई है। कोई भी कंट्री, आई मीन प्राइमरली यूएस को अगर हम देखें, कभी भी मन करता है किसी पर भी टैरिफ इंपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ की इंपॉर्टेंस को वापस सेंटर स्टेज पे लाना होगा, या फिर एक संगठन होना चाहिए
जो इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ वगैरह को रेगुलेट करे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कभी भी कोई नेता उठ के कुछ बोल देता है कि मैं इतने टैरिफ लगा दूंगा, उससे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। लोगों का विश्वास इस तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उससे धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है। सो अगेन, जो ब्रिक्स समिट हुआ है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनली गाजा में जो हो रहा है उसकी निंदा करी गई, ईरान पे जो अटैक्स हुए हैं उसकी निंदा करी गई। यूएस इजराइल दोनों इस बार के ब्रिक्स समिट को देखकर खुश नहीं होंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने इस बार के ब्रिक्स समिट में इजराइल को बिल्कुल नहीं बचाया। कहीं से भी हमने इजराइल India did not defend Israel at all. किए, भारत ने इस बार के ब्रिक्स समिट में India did not defend Israel at all. इजराइल को बिल्कुल नहीं बचाया। कहीं से भी हमने इजराइल का मेंशन ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करी। ना मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से इजराइल का मेंशन बिल्कुल भी भारत ने सिंस यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया, क्या ये सही डिसीजन था, या फिर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिंस इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं भारत के, हम यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन कर सकते थे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे यहाँ पर सवाल पूछूंगा, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी। Which is the last Indian warship to be commissioned from a foreign shipyard? It's this Vikrant, isn't it? A. Let me see here. Let me see. Oh, Tamil? It's Tamer? Oh, I was wrong. I'm sorry. I apologize. PD10, everyone. Use code PD10 to get maximum discount. Interesting. Very interesting. Just canceled my noise headphone order as it was made in China. Oh, okay. I was like, what is this headphone thing? And then China at the end. Most things are made in China, unfortunately. You have to go way out of your way to find stuff that isn't made in China. At least in a good portion of the world, I should say. India should have defended Israel because that is our permanent friend. Can they always be a permanent friend? Can any of the countries be permanent friends together? Or are they just allies for the moment? I mean, things change, right? I mean, everyone goes on and on and on about Donald Trump taking over and the U.S. changing under Donald Trump, and it's like, okay, well, I mean, does that mean the USA is a permanent enemy now because of Donald Trump? I don't know. I don't know, man. I don't know. Dear Indian government, a true friend is rare who always supports you even when you needed the help most. In Cargill in 1971, we needed Israel most and they did help. A true friend is a gem. We only have two friends who are more like a family. Please support Israel whenever you can. Israel is a beautiful country and the people are always nice towards India. 16,000 Indians live in Israel happily. Jai Hind. India should never support use of starvation as a method of warfare. It is against humanity. Well, okay, so starvation, food has been going into Gaza. It's actually Hamas that have been taking the humanitarian aid, that have been stealing the humanitarian aid and forcing the sell back towards the Gazan people. But nobody wants to talk about that. Always remember that in geopolitics, nobody is your friend. Something about Drew Vrothy. Drew Vrothy always gets brought up. Please don't lose India. India, please don't lose a friend like Israel. It is a very wrong decision. Sometimes I feel. Oh, I've already read this. This is the same comment from the same person. Interesting. India's strategic silence is a sign of India's growing stature. It speaks whenever matters more, act when count, and lead when it required to. For the first time, the Indian government has done something in the name of humanity by jointly condemning Israel. This person is saying India is condemning Israel. Interesting. Very interesting. Respect button for Indian Army. Israel's a great friend. There's a lot of differing opinions in the comments, it seems. Very, very much so. Very, very much so. Interesting. Respect and support Israel.
Modi to Trump, not stupid friend. We also have a gun. Huh? I wonder if that was just a poor translation. BRICS is the future, and BRICS is long live. Good news. We Indians should support Israel. Brazil, de-dollarization. Russia, de-dollarization, anti-US. China, de-dollarization, anti-US. South Africa, completely against Israel. Iran is a new member. So how can we say it's now not anti-American? I mean, it is anti-American. It's 100% anti-American. Those are the sanctions. Those are the countries individually, but BRICS as a whole has not made any anti-American policy till now. So what Trump is saying is just a baseless statement. But the countries make up these countries make up BRICS. So I mean, it is fairly anti-American. Not gonna lie. My unemployment took me here in a microsecond. Unemployment, brother, what? Uh, okay. Sir, if Trump doesn't take America serious, then why should we? And you take it, Trump is a world level Kapil Sharma. I don't know what Kapil Sharma is. Um, again, guys, I don't know. I don't know. I It is what it is. It is what it is. Trump held the position of the second best joker after Joe Biden. Obviously, a PAC prime minister is at number one. Wouldn't Joe Biden be number one? Trump held position of second best joker after Joe Biden, so that would imply that Joe Biden's number one. But then they saying PAC prime minister is number one. So there's two number ones tied for first place. And then this person wants India's own social media. I mean, go and make it. Nothing's stopping you from making it. You know, do a startup. Maybe you'll be the next Mark Zuckerberg. Geopolitics is a big game. We seem to be playing well here, but China is playing with less emotion. Wherever there is a big game, the more emotional influence there is, the less chance of winning. Yeah, that was the right decision, or right direction. We cannot support people dying from hunger. If you think that this is right, what you think of Bhagwan Ram would support this. Since it became used to the content of Prashant, sir, I came to know there is no permanent friends in geopolitics. Yeah. India's neutral position will bring no friends. There's no good future. India have be polarized. See BRICS. See, in BRICS, we have to cement our point, and on the other hand, Russia, China, and South Africa were supporting Gaza. If India had to keep the point, then it had to agree the points of others too. U.S. be like, we don't belong to anyone. Other nations like, we belong to someone. I don't know what this guy means by that. Oh no, why India not help Israel? This should be considered the bare minimum. Interesting. Well, I'm glad that BRICS has condemned the Pahalgam attacks. I think that more people need to do that. More people need to condemn the terrorists. More people need to condemn Pakistan. More sanctions need to be put against Pakistan. That's just me, though. Obviously, I'm just a normal dude. Yeah, I'm just a normal man that's talking to the microphone here. So it is what it is, guys. It is what it is. Go check out the original video, please. I'll catch you on the next one. Yeah. Take care. Goodbye.